नरेंद्र मोदी जी का मन में बंडी अन्ना का स्पेशल प्लेस है, बंडी अन्ना का स्पेशल प्लेस है। मैं इंटरनल मीटिंग में देख लिया, दिल्ली में एक बार मीटिंग होगा, नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होगा, बंडी अन्ना रूम में था, बंडी अन्ना का पास में मैं था। नरेंद्र मोदी जी बोला, बंडी जी आप स्टेज में आओ। ई नेशनल एग्जीक्यूटिव हॉल में आप तेलुगु में 10 मिनट भाषण करें। तेलुगु, you please understand, in a national executive meeting, when leaders from all across the country are present in Delhi, Modi ji called Bandi Anna to the stage. He said, talk in Telugu for 10 minutes. He spoke in Telugu for 10 minutes about the Yatra, about the BRS party, corruption, family rule. Everybody pin drop, they listen. Because Modi ji knows Bandi Anna's emotion. So if there is one leader in Telangana who has completely captured Narendra Modi ji's heart, it is our Bandi Anna who is sitting here. Brothers and sisters, it is important when you send Bandi Anna to Delhi, you should send with a record margin. You should not just send him with a win. You should send him to Delhi as a member of parliament once again from Karimnagar for the second straight time with a record margin. I will tell you, Narendra Modi ji